अब जरा हम तस्करा कर लेते हैं कि सिंध-तास मुआहदा एक ऐसा मुआहदा जो 1960 से लेकर अब तक बल्कि 2025 तक फ़ाल रहा और वो एक बड़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की यानी कि दरियाओं की तकसीम का मुआहदा था। 3 दरिया मशरक़ी भारत को, 3 दरिया पाकिस्तान को मिले थे और उसके अंदर से भी 80% इख्तियार पाकिस्तान के पास था, 20% भारत के पास था। लेकिन इस तरीके से भारत ने उस पानी को इस्तेमाल करना था कि उससे पानी का फ्लो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इस जंग को बुनियाद बना के नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या फैसला किया, उन्होंने इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया। अब इस पर गुज़िश्ता रोज़ जो सेमिनार हुआ था उसके अंदर पूरी दुनिया के सामने ये हाईलाइट किया गया मामला कि पानी एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते और जाहिर है कि हम इस मामले पर जिससे हमारी ज़राअत जुड़ी है, जिससे हमारी ज़िंदगी का दारोमदार और इन्हिसार उस पर है, तो हम उस पर ये इस तरह का कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस पर क्या राय रही और हमारे सियासतदान और हमारे वज़ीर इस पर क्या राय रखते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अल्टीमेटली जो है भारत को इस मसले के ऊपर भी शिकस्त हो, ये हटदर्मी दिखा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरह उनको फौजी महाज के ऊपर जो है शिकस्त फाश हुई, उनको जिल्लत उठानी पड़ी सारी दुनिया में, पाकिस्तान को अपने पानी की दफा में जो कुछ भी करना पड़ा जो है जरूर करेंगे। अगर ये एक नौबत आई हम चाहते हैं बरसगीर के अंदर, लेकिन भारत ने अगर ये कोई फिर तो हमारे ऊपर कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो जो उनके साथ पहले हुआ उससे ज्यादा बुरा होगा। पाकिस्तानी सियासतदानों के बयानात आपने देखे और पाकिस्तान की हुकूमत ने क्लियर कर दिया है और ख़ासतौर पर ये इवेंट का मकसद ये था कि दुनिया के सामने एक्सप्लेन करना कि ये हो क्या रहा है। अब दुनिया इस बारे में या जो मीडिया जो है इंटरनेशनल क्या सोच रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फ्लेवियस काबा मारिया। ये बेसिकली जाहिर है कि ये एक मैनेजिंग पार्टनर है इंटरनेशनल कंपैरेटिव सॉल्यूशंस, कंपनी दैट प्रोवाइड्स लीगल, इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग टू फर्म्स एंड entities interesting in the invest in Middle East. अच्छा, बेसिकली इनसे हम जरा बात करेंगे। थैंक यू सो मच फ्लेवियस काबा मारिया फॉर योर टाइम। Basically the Indus Waters Treaty seminar is echoing in the world. Meanwhile what India has done is that it has put the Indus Waters Treaty in abeyance. Is this not a classic water terrorism? Yeah, thank you very much for inviting me for this show. That is, I think the issue is very relevant, and of course, this is a unilateral decision that was taken, and should be by this treaty. The treaty that enforce should respect the rights to use the water irrigation, the water of Indus. So yeah, you mentioned very clear that this issue should be put in the practice as soon as possible, that Pakistan has the rights to use it. So what do you see? I mean, we have conveyed the message to the international community. We have told India that it's the matter of our lifelines, our agriculture depends on it. So if the World Bank cannot play its role and India doesn't listen to us, so what options do Pakistan have then? I think this international context is very complicated, not only on this issue. There are many issues all around the world that international law is very fragile. That I think that we should be optimistic in this case that the international community, particularly as you mentioned, World Bank and other international organizations should involve more in order to secure this treaty that is very important and relevant for the Pakistan in this particular moment. We hope that the issue will be de-escalate, but maybe will be should be a lot of pressure for the international actors. Could be also the pressure from US. Maybe also US should engage a little bit more to put pressure on this issue. Also, you are members, both countries are members of BRICS. Also, in the framework of BRICS should be discussed about this issue. Shanghai Cooperation Organization. Both states are member in Shanghai Cooperation Organization, Pakistan and India. In BRICS also
should be discussed this issue, because there are other relevant powers in this format, and this affect so many large number of people from that region. You are the fifth largest country in the world that is using water for the irrigation is very vital, especially for agriculture, as you know better, for agriculture. Dr. Flavius, it's a very sensitive matter for the Pakistanis, and India and Pakistan are two nuclear countries. And do you understand, or the world understands the gravity of the matter? Because Pakistan has already conveyed since last year to the Indians that we cannot let this happen. And if we have to resort to the kinetic operations, we are going to do that. So who can play the important role practically? Will that be World Bank, who brokered this treaty, or will that be Americans? Who can do that? Yes, as you said, this issue is very well known maybe in Asia, particularly Southeast Asia. For example, in Europe, there is not so much concern because they are not dealing with this issue daily basis, being engaged in other crises, particularly the crisis in Ukraine, or they are affected the crisis from the Middle East. This crisis, as I mentioned at the beginning, is overlapping with these two major crises in the world. As happened last year when Pakistan is very outstanding succeeded to shut down airplanes of Indian airplanes and to win the war last year. We hope that also you have this mechanism if it's in the worst case scenario you have all the strings and powers in order to secure your rights. In the other, moreover, as you mentioned, who can play this issue or who can involve more? Yes, World Bank has this or should engage, because that will stay at the beginning of the treaty as a supervisor of the treaty, and US in this moment that has a different relationship with India, a better relationship with with Pakistan. Yeah, so true. in this case, President Trump could play and to say, so we secure a new achievement in this region. That is a really very good achievement, or could be a very good achievement for President Trump in order to say we put. All right. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Flavius Kaba Maria, जो कि एक रोमानियन थिंक टैंक के ताल्लुक़ रखते हैं, सरबराह हैं उसके, और उनका बेसिकली जो इस मामले पे मौक़िफ़ यही था कि एक तो सेमिनार का इनेकाद बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया। एक इशू अगर रीजनल लेवल पर रहे तो दुनिया की उसकी समझ नहीं होती, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान इससे मुतासिर है और इसके ख़तरात और ख़दशात क्या हो सकते हैं, दुनिया किसी ज़ाहिर है कि बड़े ख़तरे से या बड़ी जंग का सामना करने को तैयार नहीं होगी, वैसे ही इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अमेरिका को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ जो मीडिएशन की वजह से ताल्लुकात हैं वो दुनिया के सामने हैं।